Menstruation and menstrual practices still face many social, cultural, and religious restrictions, which are a big barrier in the path of menstrual hygiene management. In a bid to promote menstrual hygiene, a restaurant in Western India has set up a sanitary pad vending machine for women. A restaurant in India's western Surat city has set up a sanitary pad vending machine for women in a bid to promote menstrual hygiene. Taking inspiration from Bollywood film based on a manufacturer of low-cost sanitary pads, Padman, the restaurant owner took the step after seeing the kinds of problems women face due to non-availability of pads. Signboards have been on the main and washroom gate about sanitary pads being available at the restaurant. हमने मेन डोर पे भी लिखा हुआ है और वॉशरूम के ऊपर भी लिखा है, तो जो भी लेडीज़ को ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास से एक ₹5 का टोकन कॉइन लेती है। अंदर वॉशरूम के अंदर जो वेंडिंग मशीन लगा है उसके अंदर एक रेड बटन है, वो प्रेस करेंगे, कॉइन इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइजीनिकली पैड अपने आप बाहर आ जाएगा और वो लोग यूज़ कर सकते हो। Any customer coming to the restaurant or woman passing by can come and collect sanitary pad for their use from the vending machine. ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि यहाँ पे जैसे आज के टाइम पे लोग पीरियड्स की बातें करने के लिए इतना हिचकिचाते हैं, तो इस टाइम पे इनका जो ये इनिशिएटिव है बहुत ही अलग और बहुत बोल्ड इनिशिएटिव है. For many Indian women, especially adolescent girls, menstruation is shameful and uncomfortable. From being barred from religious shrines to dietary restrictions to a lack of toilets and sanitary products, they face many challenges when they have their periods, campaigners say.